Welcome to the material session of Hopel's Career Point. This is a video for the student of class 12 on unit BII. This is the first chapter of this unit, that is Aldehydes and Ketone, and the fourth video on this chapter, covering the topics preparation of aldehyde ketone by ozonolysis of alkene and by hydration of alkyne. या पूर्व आम लास्ट दुईटा वीडियो रे चारोटी प्रिपरेशन पढ़ी सारी प्रिपेरेशन ऑफ aldehyde ketone by oxidation of alcohol, by catalytic dehydrogenation of alcohol, by dry distillation of calcium salt of fatty acid, and by catalytic decomposition of carboxylic acid. ए वीडियो रे हमें फिफ्थ और सिक्स्थ प्रिपरेशन कथा पढ़िबा by ozonolysis of alkene and by hydration of alkynes. एबे प्रथम पार्ट को जिबा by ozonolysis of alkene. How can we prepare aldehyde or ketone from alkene? Whenever alkene is ozonized in inert solvent like CH chloroform or carbon tetrachloride, then the ozone is added in between the double bonded carbon atom to give corresponding ozonoid alkene. Again, the ozonoid alkene undergoes hydrolysis in the presence of zinc to give aldehydes, ketones or both. इटा गोटे जनरल इक्वेशन लिखाई पिला माने ए डबल बॉन्डेड कार्बन रे जो चारोटी बॉन्ड बाकी अछि आमे चारोटी बॉन्ड को विभिन्न एटम ग्रुप द्वारा फिल अप करी विभिन्न एग्जांपल लिखि परिबो. आमे चारोटी जाको हाइड्रोजन नै परिबो, तीनोटी हाइड्रोजन गोटे C3 नै परिबो. आमे नजर पके गोटे पर गोटे एग्जांपल आमे सता डिस्कशन करिबा. इट इज एटा गोटे जनरल इक्वेशन अल्कीन को ओजोनोलिसिस करी ताको जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस कले आमे किबोली aldehydes बा ketones बा बोथ पाई परिबो. एकु नै इक्वेशन हाउ वी कैन राइट द जनरल एक्सप्रेशन आल्सो जनरल स्टेटमेंट कोन लिखाई पाइबो. When ozone is passed through a solution of alkene in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperatures, then corresponding ozonoid is formed. The ozonoid thus formed undergo hydrolysis in the presence of zinc to give corresponding aldehydes, ketones or both. एबे प्रथम एग्जांपल को जिबा ई जो डबल बॉन्डेड कार्बन रो दुईटी जाक डबल बॉन्डेड कार्बन दुईटी करी चारोटी बॉन्ड बाकी थिला सेते में प्रत्येक को हाइड्रोजन जोग करबा. देन व्हाट शुड बी द एग्जांपल 1. एटी जो इक्वेशन लिखा है सब जगह H नि आइछि. सो अल्कीन टी एथिलीन बा इथीन हबो ताको ओजोनोलिसिस कला परे हमको ओजोनाइड एथिलीन बा ओजोनाइड इथीन दबो ताको जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस कला परे से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड दबो. एटी हमें जनरल इक्वेशन रो प्रत्येक बॉन्ड रे H नै अर्थात चारोटी H नै इक्वेशन टी को लिखिछु. व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन? When ozone is passed through a solution of ethylene in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperature, ozonoid ethylene is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives 2 molecules of formaldehyde. ताले जते एथिलीन नबा आमे फॉर्माल्डिहाइड पाइबा. एबे एग्जांपल 2 को तीनोटी H आउ गोटे C3 नै आमे एग्जांपल टी को लिखिना. तले अल्कीन टी कोन हला ना प्रोपीन ओजोनोलिसिस कला परे से हमको ओजोनाइड प्रोपीन दबो जाको जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस कला परे हमको से गोटे एसिटाल्डेहाइड आ गोटे फॉर्माल्डिहाइड दबो. सो व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन? एटी हमें कोन नै छु ना प्रोपीन को ओजोनोलिसिस करिछु. सो व्हेन ozone is passed through a solution of propene in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperature, then an ozonoid is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives acetaldehyde and formaldehyde. एको other way मध्ये हम लिखि पारि when propene adds with ozone in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride, then ozonoid propene is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc
gives one molecule of acetaldehyde in formaldehyde. ଏବେ ତୃତୀୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଯିବା। ଆମେ ଦୁଇଟା C3 ଆଉ ଦୁଇଟା H ନେବା। ଦୁଇଟା C3 ପୁଣି ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ କାର୍ବନକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ C3 ଲାଗିପାରେ বা দুইটি ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ବନ ଆଟମକୁ ଲାଗିପାରେ। এই ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଡବଲ ବଣ୍ଡେଡ୍ କାର୍ବନକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡବଲ ବଣ୍ଡେଡ୍ କାର୍ବନ C3H ନେଇଛୁ, ଅର୍ଥାৎ C3 is attached to two different carbon atoms. So But2Ne କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଜୋନଲିସିସ୍ କରିବୁ इनर्ट सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म बा कार्बन टेट्राक्लोराइड रे से हमको ओजोनाइड ब्यूटीन दबो, ताको दे जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस करिवो से हमको 2 molecules of acetaldehyde दबो. So what should be the statement for the reaction? When ozone is passed through a solution of But2Ne in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperature, then an ozonide is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives 2 molecules of acetaldehyde. अबे फॉर एग्जांपल पर नजर पकेबा, आमे दुईटा C3 नबा किंतु गुट्टी कार्बन को दुईटा C3 आउ गुट्टी कार्बन को दुईटा H नबा देले गुटे साइड चेन को गुटे मिथाइल ग्रुप चली जिवो, हमको 2 मिथाइल प्रोपीन मिलिबो। 2 मिथाइल प्रोपीन को ओजोनलिसिस कले आमे ओजोनाइड मिथाइल प्रोपीन पाइबा, ताको जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस कले आमे गुटे एसीटोन आ गुटे फॉर्माल्डिहाइड पाइबा। सो प्रोडक्ट कौन मिलिबो डिपेंड करे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लागि थिबा चारोटी सब्स्टिट्यूएंट ऊपर। एई रिएक्शन पाई डिस्क्रिप्शन टी कोन रहिबो, व्हेन ओजोन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड at low temperature, then an ozonide is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives acetone and formaldehyde. एबे another example को जिबा। example 5 आमे तीनोटी C3 नबा, जते तीनोटी C3 नबा दुईटा गोटे कार्बन को दुईटा C3 आ गोटे कार्बन को C3 गोटे H लागिला। एटी गोटे मिथाइल ग्रुप साइड चेन को जिवो 2 मिथाइल But2Ne जते ओजोनलिसिस हबो हमको ओजोनाइड मिथाइल ब्यूटीन दबो, ताको जते जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस करिबा से हमको गोटे एसीटोन आ गोटे एसिटाल्डिहाइड दबो। So what is the statement for the reaction? When ozone is passed through a solution of 2 methyl But2Ne in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperature, then an ozonide is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives acetone and acetaldehyde. एबे आउ गुड एग्जांपल को नजर पकेबा। एग्जांपल 6 यदि चारोटी जाक C3 हमें नै जबा ताले कोन, whenever all the four C3 are attached to four substituents to the double bonded carbons, then 2,2-dimethyl But2Ne is up. So जब 2,2-dimethyl But2Ne को हमें ओजोनलिसिस करिबा, हमको से ओजोनाइड डाइमिथाइल ब्यूटीन दबो, ताकू जते बेले हाइड्रोलिसिस करिबा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक से हमको 2 molecules of acetone दबो. So what should be the statement for the reaction? When ozone is passed through a solution of 2,3-dimethyl But2Ne in an inert solvent like chloroform or carbon tetrachloride at low temperature, then an ozonide is formed, which on hydrolysis in the presence of zinc gives 2 molecules of acetone. ये थिला different examples how aldehyde or ketone is obtained by ozonolysis of alkene. एबे नजर पकेबा सेकंड प्रिपरेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ये वीडियो रे सेकंड ऑल इन चैप्टर ये 6 प्रिपरेशन अल्काइन रो आमी के बड़ी aldehyde by ketone पाइबा। for aldehyde only one alkyne can give us aldehyde, that is acetylene or ethine. Whenever ethine or acetylene undergoes hydrolysis in the presence of a GSO4 and H2SO4, then ethanol is formed, which in molecular rearrangement gives ethanol or acetaldehyde. So what should be the statement for the reaction? When acetylene is passed through dilute sulfuric acid containing a GSO4, then ethanol is formed, which in molecular rearrangement gives acetaldehyde. Only acetaldehyde is formed by this method. Only gotti aldehyde मिलिबो से होचे acetaldehyde, only gotti alkyne, that is ethine को नहीं।
Other than acetylene ଆମେ other alkyne ନେଲେ ସେ ଆମକୁ ketone ଦବ. How it will be obtained? For ketone alkyne other than acetylene को जब ଆମେ hydrolysis କରିବା हमको corresponding alkenol ଟେ ଦବ. ताको जते molecular arrangement କରିବା ସେ हमको ketone ଟେ ଦବ. So in statement what we write down, when alkyne other than acetylene is passed through dilute sulfuric acid containing AgSO4, then corresponding alkenol is formed, which a molecular rearrangement gives corresponding ketone. Let us come for example. Let us take C3 in place of R. Then what we will get? Propyne जते hydrolysis करिबा से propanol prop 1En2L दबो ताको molecular rearrangement कले से acetone बा propanol दबो. In statement we have to write down, when propyne is passed through dilute sulfuric acid containing AgSO4, then prop 1En2OL is formed, which on molecular rearrangement gives acetone or propanol. Thanks for watching Bhopal Sir's Career Point. Please like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time. Don't forget to hit the bell icon to get timely updatation of my new video.